Hello. 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 अरे आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm going to start maximum minima now. Maximum minimum. So it is third unit. Third unit topic है ये maximum minimum. Let me start. So now the name of the topic is maxima and minima. I'll write it here. First of all, I'll tell you what is the working rule, and then we'll do some problems. Topic name is maxima. Can you see the board, everyone? Hello. Hello. Hello, sir. बोर्ड Yes, दिख रहा है sir. आप लोगों को? Yes, sir. How, sir? चलिए, we can start maxima and minima. First of all, working rule, how it works. So now you see the step number one. Step number one will be here. Let f of x comma y. Let f of x comma y be a given function. Let f of x comma y be a given function. Sometimes function value will be given directly. Sometimes using the condition, we have to find out f of x value. Sometimes given, sometimes we have to find out. The second step will be, we have to find out, evaluate these p, q, r, s, t values. Evaluate these values. P is nothing but partial differentiation of f with respect to x. Then q, it means that partial differentiation of f with respect to y. Then we have next r, that is r. R means we have to differentiate this value of f with respect to x twice, two times. Already यहाँ पे एक बार x with respect to x कर देते, फिर एक बार, one more time. This is the value of r, not v. It is r. P, Q, R. Then we have s. S is nothing but partial differentiation of f. Already x is there. That one we have to differentiate with respect to y. Then finally, we have to find out t value. P, Q, R, S, T. T value means with respect to y two times. This is the second major step. P, Q, R, S, T values we have to find out. Now third step is equating P and Q to 0. Equating P and Q. Equating P and Q to 0. Equating P and Q to 0. We get stationary points. Stationary points. So what is the meaning of stationary point? The point in which the function is either maximum or minimum. That is called a stationary point. Now fourth step is we have to calculate this value, RT minus S square value. RT minus S square value at each and every stationary point. So then some cases arises. Case number one, if suppose RT minus S square will be greater than 0 and R is also greater than 0 here, R is also greater than 0, then we say that the point is दोनों greater than है तो minimum point. The second condition is same thing. If RT minus S square will be greater than 0 and R should be not greater than here, it is less than 0, then we say that point is minimum point.
minimum हो गया ना, so it is a maximum point. Then third case arises here. Maybe RT minus S square. Suppose it is strictly less than 0, then no need to check that R value here. We can say that the point is either saddle point or not applicable. This may be one more condition arises. RT minus S square equal to 0. ये case में भी आपको आगे जाना नहीं है, right? So these are the only possibilities we have to move on. We have to check whether the function is maximum or minimum. समझ में आया वर्किंग रूल? Yes, sir. चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स देखिए तो आप Sir, sir. Sir, 3 or 4 possibilities also na maximum है ना minima है. मिनिमम है. RT माइनस पर लेस देन 0 आते की छोड़ देना. द पॉइंट इज अ सैडल पॉइंट बोल के लिख देना. Test bed. ठीक है ना. लेस देन आते के आगे मूव नहीं होना है आपको. इक्वल टू 0 में भी आगे मूव नहीं होना है. Okay, sir. आर वैल्यू चेक ही नहीं करना है वो केस. चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए. सो विल डू द क्वेश्चंस. I'll start working on it. The question number 1 I am writing here. The question will be asking like this. Find the maximum or minimum value. Maximum and minimum. Maximum or minimum values of the function. Values of the function. Maximum or minimum values of the function. Here we have a function here. F of x comma y is equal to f of x comma y is equal to x cube y square into 1 minus x minus y. This is the problem here. तो देखेंगे अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं. ओके. Look at the solution. So what I said, the major step number 1. F of x comma y will be given. So clearly here it is given now. Yes, sir. Yes. So given f of x comma y is equal to f of x comma y is equal to, here it is already given, x cube y square times 1 minus x minus y. Okay. So for my convenience, I want to multiply to make it more clear. F of x comma y is equal to, if I am multiplying with 1, what is the answer? X cube y square minus x to the power of 4 y square minus x to the power of 3 y to the power of 3. Right now? अभी दोनों ही स्टूडेंट अब क्लास में आप लोग? Yes, sir. हम लोग. दोनों छे वो और एक नए स्टूडेंट में दोनों नहीं है. है सर. नहीं सर मैं भी हूँ सर. Okay, right. So then P is equal to, P means what we have to do? We have to differentiate this value of f partially with respect to x. Partially with respect to x means wherever y is there, that will become a constant. Can you tell me the answer now? X cube का differentiation क्या होता? 3x. Very good. 3x square. Y square is a constant in this case. So put as it is minus differentiation Minus of x to the 4x power of cube. 4. It is becomes 4x 4x cube. 4x cube Y of square. y square. 4x cube of y square minus Minus what is the 3x differentiation cube of x y cube cube. is? What is it? 3x square 3x square y cube. y cube. Right. Now P is over. We are moving to the next step, that is Q. How to find out? Partial differentiation of f with respect to y now. In this case, x becomes a constant. Okay, na? X becomes a constant.
तो क्या होता बोलिए? Differentiation of this one 2 X come on cube 2x cube 2y. y. x cube into y. Better to write the constant first. Okay, sir. Okay, next minus y square differentiation is 2y. So altogether becomes 2x to the power of 4 into y minus x cube difference. Sorry, y cube differentiation is 3y square. So better to write 3 here 3x first. cube y square. 3x cube y square. So this is the value of q. We got it. Now we are moving to the next, that is r. Partial Sir, differentiation of जी बोलिए. मेरे को 4x क्यूब y स्क्वायर का समझ में नहीं आया सर. कौन सा ये? यस सर. ये या तो देखिए x पावर 4 का डिफरेंशिएशन जो है ना, मैं थोड़ा आपको अलग से समझा देता हूँ. We have to apply this formula d by dx of x to the power of n. Formula is what? Derivative formula nx power n minus 1. ये standard formula है. If I am Yes, sir. finding the value of d by dx of x to the power of 4 find out कर रहे हैं, तो n की वैल्यू कितना है अभी? n की वैल्यू कितना है? 4x क्यूब. 4x cube. We are getting the same thing now. Yes. Got it? Okay, sir. Let us continue. Now double x means already x we did one time. We have to move on to find out one more time. एक और बार x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. What is the differentiation of x square? 2x. So 2x. altogether becomes 6x 6x y square. y square. 6x y square minus, now with respect to x again, x cube का differentiation 3x square. Then altogether becomes 4 3s are 12. बोलिए, come on, 12 x square y square Y square. minus x square differentiation is 2x. 3 2s are 6x 6x y cube. x y cube. 6x y cube. Now after getting the value of r, we have to find out the value of s. It means that we have to differentiate the value of x with respect to y now, which is equal to x value is here we have with respect to y. Can you give me the answer? Square y. 6x square y. Very good. 6x square y minus, now again 8x cube y. very good, 8x cube of y Y. minus 9. 9x square y square. Very good. 9x square y square. P q r s is over. Now t, that is equal to f y y, means we have to differentiate the value of y one more time with respect to y again. So the answer will be 2x cube because y becomes 1. Next minus 2x power 4 because the y becomes 1. Next minus, can you tell me this? 3 to the 6. बोलिए, 6x cube of y बराबर है हाँ सर. P Q R S T तक हो गया. देखिए कुछ डाउट है तो बोलिए, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ. सर एक बार s का समझा देना सर. x का देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास x है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, उसको विद रेस्पेक्ट टू Yes, y sir. कर रहा है. विद रेस्पेक्ट टू y मींस y स्क्वायर बिकम्स 2y नो. Yes, sir. तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना. 3 2 जा 6x square y like that. जी. Again 4x cube as it is. Y square differentiation is 2y. So all together becomes 4 2 जा 8. 8x cube of y like that. Then Okay, minus all 3x square as it is. Y cube का differentiation 3y square. So 3 3s are 9x square y square. जी Okay. सर. ओके. Now moving Yes, sir. moving to the next page. Now, if you continue the same problem, PQRST is over.
right? PQRST is over. We have to go for second step. What is the second step? RT minus S square. No. Equating P and Q to 0. देख लीजिए एक बार, ये देखिए प्रीवियस पेज पे जाके देख लीजिए. Evaluate PQRST is over. Third step is equating. थोड़ा disturbance हो रहा, देखिए किस वन से हो रहा, देखिए. Equating P and Q to 0, we get a stationary point. So let me equate P and Q to 0. Now we will write it here. Equate P and Q. Equate P and Q to 0. Equate P and Q to 0 means when equating P to 0, the answer it is what we are having 3x square y square 3x square y square minus 4x cube of y square minus 4x cube of y square minus 3x square y cube 3x square y cube equal to 0. It means that we are equating P to 0, comma Q also equating to 0. That Q value is 2x cube of y minus 2x power 4 of y minus 3x cube y square Y square equals is equal to 0. अगर आपको चेक करना है तो मैं एक बार प्रीवियस पेज में जाकर भी बता देता हूँ आपको. P and Q देख लीजिए एक बार. ये देखिए P 3x square y square. Here also we have 3x square y square. Here we have 4x cube y square. Here also we are having 4x cube y square. And here we are having 3x square y cube. Here also 3x square y cube. Then Q also will be there. यहाँ पे 2x cube 2x power 4. वही लिखा देखिए. Right now? Yes. Now, see here we have some simplification. Now you look at this complete value of P. Is it possible to take x square y square as a common term? ले सकते हैं common. Yes, देख sir. लीजिए एक बार. X square y square if I am taking common, here 3 Yes, left sir. off. Here 3 3 left minus off. 4x Very good. 3 minus 4x minus minus 3y 3y. equating to 0. This is the value of P we are equating to 0. Now यहाँ पे भी देख सकते हैं आप. We can take it x cube of y as a common term. ले सकते हैं ना? Yes, दोनों में sir. से फर्स्ट टर्म ही ले रहा हूँ. So 2 minus 2x left off here minus 3y left Minus off here. 3. It is equal to 0. So P equal to 0, Q equal to 0 is over. We are taking common, that is also over. Now यहाँ पे देखिए x square y square is equal to 0 is the first case and 3 minus 4x minus 3y is equal to 0 is another case. It means यहाँ पे अपने पास जो cases arise होते हैं वो है x is equal to 0, comma y is equal to 0, comma if you bring minus value that side we are getting 3 is equal to 4x plus 3y. 4x plus 3y. Called it as equation number 1 also. Similarly, here also the same cases arises. X cube is equal to 0 means becomes x 0. Y is equal to 0. And if you bring minus values that side, we are getting 2 is equal to 2x plus 3y. Any doubt in this step? Take it No, as sir. equation number 2. No, sir. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए. Solving 1 and 2. Solving equation number 1 and equation number 2. So we are getting like this. 4x plus 3y is equal to 3 here. Then we have here 2x plus 3y is equal to 2 here. So while solving, change the sign, minus, minus, minus. These two are cancelled. 4x minus 2x is 2x is equal to 3 minus 2 is 1. So we can get a x value as 1 by 2.
If x is 1/2, you put anywhere to get y value. आप सॉल्व करके देख लीजिए. We're getting y value is 1/3. होना बोल दो सॉल्व करके बता दो. Y value is 1/3. 1 by So after getting x value, y value, totally how many stationary? Step 3 में वही बोले ना अपन. यहाँ पे देखिए एक बार. क्या बोले यहाँ पर? Equating p and q to 0, we get stationary points. So how many stationary points we are getting? You see, x0, y0, एक stationary point आ गया. So I'll be using another color here. 0, 0 is a one stationary point. अब आप देख सकते हैं when x0, if you put this x0 here, if you put x0 here, what is the value of y we are getting? When x0, y becomes 1 now. 3y is equal to 3, means y becomes 1. Yes or not? Tell me. Oh, sir. Comma. Next, another possibility. When y is 0, x becomes 3/4 now. X becomes 3/4 whenever y is 0. यहाँ से 3 points आ गए. Next, here, when x is 0, what is this? Y becomes 2/3. ये x is 0, we have to substitute here. We'll get y value is 2/3. If you substitute y0 here, if you put y0 here, बोलिए. Why not? Yes. So x is 1, 0, और लास्ट में जो अपने को और एक पॉइंट आया वो अपना 1/2, 1/3. So these are the possible stationary points we are getting. 0, 0, 0, 1, 3/4, 0, 0, 2/3, 1, 0, 1/2, 1/3. These are the possible stationary points. तो ये आपके पूरे आ गए stationary points. Now we have to calculate RT minus S square at each and every stationary point, and we have to decide the nature of the function, whether it is maximum or minimum. तो आपका next step up रहेगा RT minus S square calculate करने का. RT minus S square, which is equal to, what is R we are getting? R अपने पास क्या है देखिए, एक बार बता दो इधर जाके पीछे प्रीवियस केस में. यहाँ पे देखिए R वैल्यू, ठीक है ना. 6x²y, ये अपनी R वैल्यू है. What I am doing here is 6xy² कॉमन ले रहा हूँ, तो we are getting 1 minus 2x minus y, बराबर है. देख लीजिए एक बार. yes sir. Next, from t also I am taking 2x³ common. आ सकता? Yes sir. 2x³ common if you take, left off is what? 2 1 minus 2x 1 minus x minus 3y, right? अरे बोलो बाबा. S square. Yes, sir. हाँ आंसर दिए तो मेरे को मालूम था कि आप लोग क्लास में है. अब वो अपनी नॉर्मल क्लास के ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है. और यहाँ पे से सब में देखिए x² y कॉमन आ रहा है. x² y कॉमन. 6 minus 8x यस, 6 minus minus 9y. 8x minus 9y. बस यही वैल्यूज को मैं ऊपर यहाँ पे अपने नेक्स्ट पेज में लिखने वाला हूँ. बस ये पेज में यहाँ पे, ठीक है. तो मैं थोड़ा सा उसको ग्रीन कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से. 6xy², ठीक है, इंटू 1 minus 2x minus y इंटू 2x³ इंटू 1 minus x minus 3y. ये हो गया RT minus S square. S square means x² y into 6 minus 8x minus 9y. 8x minus 9y. This is also whole square.
राइट, समझ में आ गए? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हाँ देखिए उसके बाद में देखिए आप एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, ओके, एक्स स्क्वायर वाई, ओके, एक काम करेंगे, 6 2 जा, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस टू, 6 2 जा 12 x to the power of 4 into y square into 1 minus 2x minus y into 1 minus x minus 3y, ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई को स्क्वायर अलग से कर दे रहा हूँ, या सेपरेटिंग दिस वन, एंड हियर ऑल्सो 6 minus 8x minus 9y, this also I am squaring separately, right? Right? Yes, Yes, sir. sir. हाँ देखिए यहाँ पे देखिए x पावर 4 वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी x पावर 4 वाई स्क्वायर वाला टर्म है ना, हाँ। तो कॉमन ले ली, एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर को कॉमन ले ली, इसको एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं ना अपन, Yes, sir. तो वी आर गेटिंग 12 into 1 minus 2x minus y into 1 minus x minus 3y, ओके, ये तो कॉमन आ गया, बाहर चले गया, माइनस 6 minus 8x minus 8x minus 9y. 9y होल स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है। नाउ अब पॉइंट्स अपन चेक कर रहे हैं, पूरे पॉइंट्स को चेक करना है। अच्छा, अगर अपन जीरो को करें तो क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ, जीरो क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, इफ यू पुट जीरो, जीरो इनटू एनीथिंग जीरो, जीरो इनटू एनीथिंग जीरो, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो आया, आगे मूव होना है नहीं होना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो क्या है यहाँ पे, ये मूव नहीं होना है ना नहीं आपको आगे, होना। यस, Yes, sir. Fair. ना मिनिमम ना मैक्सिमम। हाँ, तो फिर वो जीरो को नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एक्स जीरो हुआ तो भी आंसर जीरो हो जाता है, वाई जीरो हुआ तो भी आंसर, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये पूरे पॉइंट्स में फंक्शन मैक्सिमम भी नहीं हो रहा, मिनिमम भी नहीं हो रहा, आप चाहे तो चेक कर ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेक इट, आई एम मूविंग डायरेक्टली टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। एट अपना मेन टारगेट जो पॉइंट है वो है 1/2 comma 1/3, this is our main targeting point, we are going to put in place of x and y, so now what happened, we'll check it, at this point we are checking rt minus s सर square, हमारा एग्जाम में कैसा पहचाना सर, मतलब कौन सा पॉइंट लेना सर? ये तो आप चेक करके देख लो रफ कॉलम, पूरा नॉन जीरो हो जीरो जाता, टर्म से ये जीरो होता, ये जीरो होता, ये जीरो होता, ये जीरो होता, पूरे जीरो हो जाता, ओके, जीरो आ रहा ना भाई, जीरो इनटू एनीथिंग क्या होता, 0. इसलिए मैं नहीं चेक कर रहा हूँ। अभी देखिए x की प्लेस पे 1/2, y की प्लेस पे 1/3 अगर सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, x स्क्वायर मीन्स 1/2, 1/2 whole square is 1/4 into 1/3, that is 1/12, 1/12 whole square into 12 into 1 minus 2 into x value 1/2, 1/2 into 2 is 1, minus y value is 1/3 into 1 minus x value is 1/2, since y is 3, 3 cancel, we are getting minus 1, minus, sorry, minus 1, minus 6 minus, अब थोड़ा सा देखिए लॉजिक, 8 into 1/2 means 4, 8/2 means 4 ना, 9 into 1/3 means Yes, 3, sir. थोड़ा 3. सा सिंप्लीफिकेशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप करके करें तो भी ओके, अदरवाइज डायरेक्ट भी करें तो नो प्रॉब्लम, +1 -1 कैंसिल इट आउट, +1 -1 cancel it out, this -1/3, this -1/2, if you multiply you are getting 1/6, 12/6 becomes 2, और ये होता 6 - 7, 6 - 7 is -1, -1 whole square is +1, so 1/12 whole square, 12 whole square is 144, 144 into here we are getting what, 2 - 1, 2 - 1 is 1, so actually we are getting, our answer is 1/144, 140. as you know that this value will be greater than 0, positive आ रहा ना, Yes, sir.
नाउ आर वैल्यू देख लीजिए आप, आर वैल्यू सेम पॉइंट पे 1/2 कामा 1/3, तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास ये फर्स्ट वैल्यू आर थी, देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरी आर की वैल्यू Yes, भाई 6. 6 into x, x is 1/2 into y square means 1/9 we can write now, into Yes, sir. 1 minus 2 into 1/2, it is 1 minus 1/3, so it is becomes plus 1 minus 1 cancel, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें 3 2s are 3 3s are, so then we are getting यहाँ पे देखिए आपको आ रहा 1/3 माइनस 1/9, तो ये आपको आंसर आ रहा, और ये भी कैंसिल हो जाता, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता, ये 1/3 इंटू 1/3 मीन्स माइनस 1/9, तो क्या आ रहा, लेस देन 0 आ रहा ना। Yes, sir. तो कौन सा केस में देखिए आप, वन वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0, अनदर वैल्यू विल बी लेस देन 0, कौन सा है, मैक्सिमम है ना। Maximum है. हाँ, so finally we'll write the function is maximum at 1/2 comma 1/2, तो आंसर लिखना है यहाँ पे, therefore the function is maximum at 1/2 comma 1/3। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो आपकी फंक्शन वैल्यू थी ना, यहाँ पे देखिए ये आपकी फंक्शन वैल्यू हुई है, ये फंक्शन वैल्यू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये फंक्शन वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो फंक्शन अपना मैक्सिमम आया ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, तो एट 1/2 comma 1/3 in place of x and y, so it is equal to, when x 1/2 whole power 3 is 1/8, 1/8. so into 1/9 into 1 minus 1/2 minus 1/3, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लिए तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 1/432, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर दे। एक बार ओरली एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या करें अपन पिछले सर पेज में कितने मार्क्स आएंगे सर? लिखी हुई है, डायरेक्ट 14 मार्क्स है नहीं सर? नहीं 14 मार्क्स तो कौन सा भी नहीं है, 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आपको 4th यूनिट नहीं तो 5th यूनिट में से आता, 3rd यूनिट 1st यूनिट 2nd यूनिट में से 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। ओके सर। अब ये ऐसा हम अपन स्लो जाके पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे नहीं कर रहे, तो इतने 4 पेज दिख रहे हैं आपको, मगर आप नॉर्मल करें तो इतना वर्क नहीं रहता इसका। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया, फंक्शन इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट पी क्यू आर एस टी वैल्यूज, और इक्वेटिंग पी एंड क्यू टू 0 हो गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेटिंग, एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट, तो दिस इज द फंक्शन वैल्यू, तो पी क्यू आर एस टी। नेक्स्ट स्टेप वी आर मूविंग, we are equating p and q to 0, we are taking common, and if you simplify we are getting different points, stationary points अपने को 6 मिले, 1 2 3 4 5 6, so at each and every point we have to find out rt minus s square, since here it is 0 0, so that's the answer will be 0 0, so that is unable to decide the nature of the function when the point is 0 comma 0, so then it is not, we are not going to find out, आप चाहे तो कर सकते एग्जाम में, आपकी चॉइस है। So next directly I will be taking this point 1/2 comma 1/3, so then we have to find out, and rt minus s square एक आया greater than 0, r value at the same point less than 0, तो function is maximum, तो maximum की वैल्यू भी अगर मिनिमम आए तो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर, ये फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू, राइट, Sir. ठीक है, समझ में आ गया ना, Yes, sir. ओके राइट, तो और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इससे रिलेटेड, अभी अपने पास सर यूजुअली कितने पॉइंट्स आते हैं सर?
कभी कभी 2 पॉइंट आते हैं, कभी सिर्फ एक ही पॉइंट आ जाता है, कभी कभी 8 पॉइंट्स भी आते हैं। वो फंक्शन को अपन जब सॉल्व करते हैं ना, सॉल्विंग इक्वेशंस, दैट डिपेंड्स। इक्वेशन को एग्जाम सॉल्व में करने के बाद जी, एग्जाम में मतलब यूजुअली कितने पॉइंट्स का आता सम? वो तो सॉल्व करे बाद ही पता चलेगा ना। अच्छा, सॉल्व करना। ओके सर। हम्म। ठीक है ना, ओके। यस Yes, सर। sir. Shall we end the meeting now? Yes, sir.